Okay, hey there everybody, what's up? How are you guys all doing? Before we basically get into the purpose of this entire video, मैं थोड़ी सी back story देना चाहता हूँ. I've been gone from YouTube for a very long time. The reason for that was मैंने अपनी production company खोली थी. It goes by the name of Just Lucid. If you guys want to check it out, you can do so. It was going great. We were doing a lot of gigs. We were making ads for a lot of good companies. And then quarantine happens. Quarantine में मैं अपनी family के साथ था. मैंने उनके साथ time spend किया और मैंने एक अच्छी सी B-roll video बनाई है जो अभी आप लोगों ने देखी है, राइट. इट वॉज अबाउट हाउ माई फैमिली वॉज मेकिंग पिज़्ज़ा और मैं उनके साथ ही था, तो हम लोग पिज़्ज़ा बना रहे थे साथ. और फिर आई एम नॉट रियली गुड एट कुकिंग, तो मैंने बोला मैं वीडियो बना लेता हूँ. आई पोस्टेड द वीडियो ऑन इंस्टा एंड मेरी एक टारगेट था दैट इफ इट रीचेज 100 likes आई एम गोना पोस्ट एन एडिटिंग ब्रेकडाउन. Given the current situation of the quarantine, मुझे लगा यार editing breakdown could be really useful. We don't really have a lot to do and learning new skills could help us basically pass some time. और मेरा भी time pass हो जाएगा because I go back to YouTube, right? So yeah, there was the video crossed 100 likes I think yesterday night. So it was time for me to start the video that we're making right now. तो मैं इस वीडियो में बेसिकली बताऊंगा कि मैंने एडिटिंग किस तरीके से की है उस वीडियो की. द वीडियो इज गना बी बेसिकली लाइक ब्रोकन डाउन इनटू 4 parts. सबसे पहला पार्ट होगा हमारा द शूट, राइट, हाउ आई शॉट द वीडियो. देन वी आर गोना मूव ऑन टू द एडिटिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द फुटेज दैट आई हैड. फिर हम लोग कलर ग्रेडिंग की बात करेंगे और एंड में हम साउंड डिज़ाइन और मिक्सिंग की बात करेंगे, राइट. तो सबसे पहले शूट की बात करते हैं. आई शॉट द इंटायर वीडियो ऑन दिस कैमरा राइट हियर, लाइक नॉट दैट वन, this one, the one you're watching this video on. तो ये जो कैमरा है इट्स द सोनी A6400 पे मैंने शूट किया विद 16mm सिग्मा लेंस f1.4 एंड कलर प्रोफाइल मैंने S-Log2 यूज़ किया है. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जेनेरिक रखें सो यू नो द वीडियो इज़ फन एंड नॉट टू टेक्निकल. तो या I shot on this camera. मैंने कोई gimbal नहीं यूज़ किया. If you guys have seen the video, if you think यार ये ultra smooth footage इसलिए, no, it's just 120 fps. It's handheld. एक तरीका होता है handheld film करने का, and I personally prefer handheld. मैंने Daniel Schiffer की बहुत videos देखी हैं, मुझे उससे ये बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया था that handheld has its own vibe और आपको उस पर भी खेलना चाहिए. तो the whole video was handheld and you know you do movements like आप उधर rotate करते हो, you stop the camera in mid-air like this and then you take it out. Right, and then shots like that when they go into like if they're shot at 120 fps जो ये थे and they go into slow motion, they look great. So that's basically what I did. I had 2 lights, both of them I'm using right now as well. They're the Yongnuo YN600 RGB lights. So ये जो पीछे आपको orange tinge दिख रहा है ये एक लाइट है और ये जो मेरे फेस पे है ये दूसरी लाइट है. तो मैं यही 2 लाइट्स यूज़ करता हूँ properly for like even my commercial gigs. These are the 2 lights that I'm using. उस वक्त सेटिंग काफ़ी सिंपल थी. एक सामने से थी like from a 45-degree angle और एक उसके बिल्कुल opposite लाइट थी मगर थोड़ा डिस्टेंस पे. That's basically all I did for lighting and shooting. यहाँ तक हर कोई एक ही पेज पे है. मैं इस पर बहुत ज़्यादा डाइव इन नहीं करना चाहता. बहुत टेक्निकल और बोरिंग डिटेल. आई वांट टू गो इनटू द एडिटिंग पार्ट बिकॉज दैट्स माय फेवरेट पार्ट. आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो जिसमें मेरे पास इक्विपमेंट नहीं होता था, मैं फिर भी एडिटिंग पे बहुत फोकस करता था बिकॉज दैट्स समथिंग दैट आई पर्सनली रियली एंजॉय. Okay, that's done. Now let's go into the editing and cleaning aspect of the entire video that we basically shot. So I edit everything on Final Cut Pro. So why do I use Final Cut Pro? It is incredibly user friendly. Like आप इसका interface भी देख सकते हो. It's like really fun to use because ये बहुत simple है. आज से 2 साल पहले मैंने आज तक कोई professional software नहीं टच किया था. Premiere में आज तक use करना नहीं आता. But Final Cut Pro is something that's like really easy to use. और अगर आप एक दिन में सीख सकते हो software. Plus, you still get to do everything that you can do in Premiere, so it's like a win-win situation here. Anyway, moving on. I'm just gonna open the project we have. It's in my personal folder. Let's go into... Yeah, this was the Insta version जिसमें मैंने vertical film की थी पूरी चीज़, but we're gonna go into the horizontal one because that's clearly a better video. Okay, here we are, pizza. I'm just gonna fill it to the screen so you guys can see it. Now, I want to remove all this clutter. Like, I don't want to focus on all the secondary footage right now, and I don't want to focus on what do you call it, all the sound I have. So I'm just gonna remove it from the equation, and I'm going to turn off all the effects so you guys can see what the footage looked like in its raw form. अभी भी इस पे speed ramping हुई भी है. I'm gonna get into that in just a bit. To start off the video, we're going to talk about how to select the footage that you're using, right? So like I had 2 to 3 takes for every clip, right? I'm just going to show you all the videos that I have over here. So like this is the clip that I start with, right? Handheld hai pura, and like if you just like take a look, abhi ye maine slow mo kiya hua, it's like running on 20% speed, and then there are 3 more clips, and then we get on to this shot in which I'm flipping this, right? Selecting the clips is, I would say, the hardest part of any video. It's not that which
clip is shot right, it's which clip feels right. क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा that there's certain clips that you shoot very well और आपको लगता है आप वो use करोगे post में, मगर a clip that was probably shot not as great ends up looking better, तो आप वो use कर लेते हो. In my experience, like this entire thing has how many clips? Like not even complete clips, I would say. मगर roughly इसमें use हुई भी हैं 30 to 40 clips use हुई होंगी इसमें, right? So in the beginning मेरे dad थे इसमें, and then you know he's like flipping up the what do you call it, the brush, and then he's brushing it, and I'm just मैंने कोई planning नहीं की इसको shoot करते हुए, I'm just shooting it, and I liked all these clips in combination. एक चीज़ बहुत ज़रूरी है when you select clips, like for example take a look at this clip and then this clip that's immediately after it. Contrast है, right? You don't want to use similar clips too close to each other, right? Because that just ruins the feel of the entire thing, क्योंकि फिर जो है contrast नहीं आता, ऐसा लगता है कि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं की और video doesn't end up being very interesting, right? You go forward and you'll find क्या बोलते हैं different clips. अच्छा, now look at this. This is a unique shot. Try to use not too many unique shots but as many as you can. Particularly मैंने ये shot use किया था जिसमें ये rotation सी होती है and then it goes below because it ends up really nicely with the connecting shot. Transitions पे मैं आता हूँ, अभी I'm just clicking on the shots, right? So yeah, diversity of angles. You always want diverse angles and ratios when you're basically making shots. Don't just choose the shots that look good. Choose the shots that are very different from each other. Overhead हो गया, you know, like front and back motion, panning shot, rotating shot, unique shots. Try to use as many of those as possible. ये हो गई बात selecting shots की. Now let's talk about the editing aspect of it, right? So when you get into the editing, first thing you do is choose a good song. I cannot stress this enough. लोग बहुत बेकार गानों पे videos बनाते हैं and that ruins the entire feel of the video, right? Without a good song, there is no point in making a video. I would say sound is 90% of video. It's as simple as that. So don't neglect choosing your music, right? This is the song I chose. So just like first I'm going to show you the video without the music and just take a look at how it looks, right? It'll look purposeless, it won't look good, it'll just look like it's some random shots coming together, or वही है क्योंकि essentially the music is what makes the video a video, right? Other than that, there's really no point. So now let's go for the music. Let's see the music that we have. So this is the music that I chose, right? आप वाइब चेक करो गाने की, राइट? आप वाइब चेक करो, पूरे सीन की आप वाइब चेक करो, राइट? इट्स फैमिली मेकिंग पिज्जा, इट्स फन, इट्स कामिंग, इट्स सूदिंग. यू नीड म्यूजिक दैट रेजोनेट्स दैट. अब इस पे अगर आप एक डब स्टेप लगा दोगे या ट्रैप लगा दोगे जो बम 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 बम, it just doesn't make sense, right? And if it's like really hardcore music, like hard rock, like again, doesn't make sense. It needs to go with the vibe of the video, right? That's what this music does very well. Now that you've selected the music, you select how to edit it according to the music, right? In my personal experience, if you look at it, मैं एक particular तरीके से करता हूँ editing. I use a lot of speed ramps. Speed ramps क्या होते हैं? Speed ramps होते हैं when you go from slow to fast to slow in terms of the video speed. In the very first shot of the video, you're gonna see a speed ramp like that. Like if I just play this, very first shot, right? You will see, right? It makes sense over there. Like हाथ में वो चीज़ फ्लिप हुई, वहाँ पे स्लो हुआ, जब बीट वापस हिट करती है चीज़ वापस तेज हो जाएगी. The rest of the video in terms of editing is just that. I don't want to go into deep into every kind of transition I've did, मगर if you notice, मैंने 5-6 किस्म के transitions ही use किए हैं पूरी वीडियो में, right? Either you'll see a scaling up, scaling down, going fast, going slow, video coming into 2 bits, video reversing. इस टाइप की चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं, but the central theme is that it needs to be done according to the beat of the song, right? Now, a song beat is always recurring, और आपको ये बात याद रखनी है. कहीं आपको तेज करना है, कहीं आपको slow रखना है. You need to keep that theme consistent throughout the video. So like if it's like if that's the beat, it's gonna repeat after every word. So if bhutat is the slow aspect, मतलब अगर आपने पहले 2 seconds of the chorus या जो stanza है slow रखें, keep that consistent in the video. कि जब भी वो beat वापस आती है, आप एक slow shot डालो. So it should be like slow, fast, 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 slow, fast, 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 slow. And that's another aspect, right? You don't want the clips
to be in a monotonous fashion कि हर clip की duration similar है, वो कभी भी नहीं करो. Very few instances where that actually works out looking good. But you want your clips to have different durations, right? Stay in for different times and stay in for different वो. और उसके अलावा मैं पर्सनली अगर आप नोटिस करो आई एम नॉट ए ह्यूज फैन ऑफ फिल्मिंग ट्रांजिशंस दैट आर इन बिल्ट. इस पूरी वीडियो में आपको एक भी ऐसा ट्रांजिशन नहीं मिलेगा जो एक प्लग इन है. ऑल ऑफ द ट्रांजिशंस वर इन कैमरा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप देखते हो कि फुश करके एक वीडियो चेंज हो रही है तो वो होता क्या है उसमें कि आई टेक माई कैमरा एंड व्हेन आई एम डन विद द शॉट मैं कैमरे को नीचे ले जाता हूँ एंड देन इन द नेक्स्ट शॉट मैं कैमरे को ऊपर लेकर आके शुरू करता हूँ. और जब आप उसको मिक्स करते हैं तो इट्स अ वेरी स्मूथ मूवमेंट जिसमें कैमरा नीचे जाके ऊपर आता है और ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई ट्रांजिशन हुआ. इट्स दैट सीमलेस. आई डोंट यूज अ लॉट ऑफ एनिमेशंस, अ लॉट ऑफ like picturization and stuff like that, and you won't find that here either. So yeah, the rest of the video is just beat killing. आपने beat पे पूरी video बनानी है and you need to imagine the beat when you're filming as well. Now let's get to color grading. Color grading is an aspect of video production that I feel like a lot of people are messing up. S-Log2 or any log footage is footage जिसमें बहुत flat picture होती है, right? It doesn't look good at all without color correction. Just to give you an example, like this is my video and if I add color correction to it, look at how much it gets transformed, right? Why? Because log footage is always not that good and that is something that you're always going to face. Uski wajah ye hai ki then you have more control over post, you maximize your dynamic range and you get the most cinematic looking clip there is. So it's difficult to shoot in S-Log, it's difficult to edit in S-Log, but it's the way you get the best results. So yeah, this is the before and after of this particular shot. This is my favorite shot in the entire video, by the way. So let's talk about how I color corrected my personal footage. So the first step in color correcting log footage, आपको ये करना है कि आपने अपनी dynamic range को वापस minimize करना है. So what you do is whatever software you're editing on, आप जाओगे उसके video scopes पे, and video scopes पे you see कि dynamic range कहाँ पे है, right? So the first effect you put on is the color wheels. I'm just gonna disable all the color wheels, right? कलर व्हील्स में आप क्या करते हो कि ये आप जो देख रहे हो ये जो लाइंस हैं अंदर, दिस इट शुड गो टिल 0 एंड इट शुड गो अप टिल 100. दैट्स जस्ट अ नंबर. इससे बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने जो लोज हैं और हाइज हैं एज इन द शैडोज एंड द हाईलाइट्स ये आपने मैक्सिमाइज करने हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू व्हेन वी टर्न ऑन द कलर व्हील्स. तो what we basically do is like if आप जो है ना इधर से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्वीकिंग. So this is how the footage starts, right? So you bring it low until it comes close to 0 and then you bring the highlights high. Abhi dekho kitne high hain. This is how the highlights were in the beginning. But you bring them high until they go to 100. Now that looks great, right? This is something कि आप हर एक वीडियो में सबसे पहले तो आपने ये करना है ना कि आपने कलर व्हील्स के थ्रू जो उसकी डायनामिक रेंज है, जो उसकी लूमा लेवल्स हैं वो ठीक करने हैं. आई एम नॉट इवन गोना टॉक अबाउट कलर्स अभी. पहले आप ये करो जाओ और उसके बाद जो है you start with the rest of the footage. Now once you're done with this, you're done with 80% of the transformation. Now comes the saturation, right? अच्छा, अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ना आपको color correction, ये बहुत subjective है. There is no right or wrong way to do this. This is how I do it. You can do it differently. अच्छा, सबसे पहले तो मैं जो है वीडियो स्कोप्स को ऑफ कर देते हैं. मैं सैचुरेशन बढ़ाता हूँ, स्पेशली इन अ वीडियो लाइक दिस, नॉट इन एवरी वीडियो बट इस वीडियो में मैंने सैचुरेशन क्यों बढ़ाई? मैंने बोला ये खाना है, राइट? यू नीड नाइस एंड वाइब्रेंट कलर्स, अदरवाइज इट्स नॉट गोना लुक दैट लाइवली. So I increase the, what do you call it, the saturation levels of it. Saturation जब मैंने increase कर ली, I am done with this particular aspect of color correction. If I go into this, मैंने बस saturation में गया हूँ and I just increased the gray aspect of it and I was done. That's it. That's all I did in this. अब आती है आखिरी लट की बारी, right? आखिरी जो मैं चीज़ करता हूँ usually color correction, that is to add the stylization. अभी तक हमने style नहीं किया अपनी clip को, हमने उसको प्रिटी नहीं बनाया. अभी तक हमने उसमें जो एसलॉग ने चीज़ें निकाली थी हमारी प्रोफाइल ने, वो चीज़ें ऐड की हैं वापस. दैट्स ऑल वी हैव डन अप टिल नाउ. अब हम आगे लेके जाएंगे इसको किस तरीके से कि इफ़ यू टिक माई कलर बोर्ड टू, यू विल सी दैट देयर इज अ वेरी स्लाइट चेंज. You know, like now it's a little bit playful. पहले it was just plain colors, but now it's playful. How is it playful? कि मैंने क्या किया है कि now this is a little tricky. I do this. You don't have to do it once again. You select a particular color range. मैं usually skin tones को separately color grade करता हूँ. Skin tones as in जो मेरी skin है. इसकी वजह
ये रूइन हो जाती है. अगर मुझे बैकग्राउंड को परफेक्ट करना है मुझे इसको रूइन करना पड़ता है क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव होती है टू कलर करेक्शन और आपके चेहरे में इतने मूविंग एस्पेक्ट्स हैं कि इफ़ नॉट डन राइट इट्स नॉट गोना लुक गुड. तो व्हाट यू डू इज के आई डोंट नो हाउ टू डू दिस इन अदर सॉफ्टवेयर, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट हियर, बट इन माय सॉफ्टवेयर आई क्लिक ऑन दिस लिटिल आई ड्रॉपर एंड आई सिलेक्ट a color range. In this case, the skin is the color range I'm selecting, right? I'm gonna select all of it. What does that do? That means कि अब मेरी स्किन अलग तरीके से कलर करेक्ट होगी और मेरा बैकग्राउंड अलग तरीके से करेक्ट होगा. तो स्किन में मैंने क्या किया, I just increase the orange levels, right? Because like this is your skin right now, and I increase the orange levels so that it looks a little bit more alive. सही है. And how do you get your क्या बोलते हैं colors to pop up even more to look more cinematic? आप बाकियों में orange decrease करो. And how do you decrease orange? Orange का opposite क्या है? Blue. You increase the blue. So we're gonna click on this little outside button. Now we're color correcting everything that I have not selected. मैंने select क्या की थी? Skin tones. तो skin tones के अलावा हर कुछ color correct होगा. So if we see this, like if we just go like अगर मैं इसको नीचे करूँ तो look at that. Bumping this up makes the background a different color and it basically protects your क्या बोलते हैं pizza and your skin. Actually pizza थोड़ा सा desaturated हो रहा है. I'm just gonna include this as well in this as well. Yeah. So now we have like a perfectly graded footage. अगर आप इसको देखो तो इसमें क्या बोलते हैं color, if I turn off the effects and turn them on, look at the difference, right? Doesn't that look great? You do that for every single clip. ठीक है. You can copy paste the effects of the saturation and tones, लेकिन जो color wheels वाला है वो आपको हर clip के लिए individual करना पड़ेगा because every clip is lighted a little differently. Okay, let's move on. Last part, sound design and mixing. This is the most complicated part, I would say, in a way. I'm gonna play the video for you without the music and look at what it looks like. Okay, it looks like crap, right? But मैं usually sound off करके ये सारी चीज़ें ऐड करता हूँ और उसकी वजह mainly ये है कि sound off करके ही आपको पता चलता है कि how bland the clip is on its own. देखो, अच्छा गाना is one aspect of it. If you have a good song, great. But without good sound effects, you're not gonna hit every beat properly. It's not gonna hit people the way it should, right? When you watch a good video, it kind of makes you feel something, right? It makes you feel satisfied. Why? Because it's going in the way that naturally things are supposed to go. And how do you make it more natural? You add sound effects that are in the environment. So yeah, so the first step of that is putting the dramatization effects, right? Like the effects like that. सबसे पहले तो मैं वो डालता हूँ. Why? They're easy, they're generic. वो हर क्लिप में एक ही चीज़ डल सकती है. ये ड्रामेटाइज वाले हैं, ये एक्चुअल साउंड्स नहीं है. तो once you put those in, and like, and अब वो आप कहाँ डालते हो? वो आप डालते हो जब फुटेज तेज या स्लो हो रही होती है, राइट? एकदम से. तो if this footage is going like this, तो it's like, see how good that feels just looking at it. Once that is done, अब आपने एक्चुअली मुश्किल वाला पार्ट डालना है, क्योंकि अब आपने क्या करना है कि जो नेचुरल साउंड्स हैं, पानी के उबलने का साउंड, चीज़ें कैच करने का साउंड, चीज़ें गिरने का साउंड, ये आपने डालना है. And how do you put those in? You have to find them off the net, and they're very hard. आपको EQ में जाके possibly settings भी change करनी पड़े to get that perfect feeling. But it's necessary. अगर आपको एक वीडियो को actually crazy बनाना है, तो that's just how you have to do it. Then let's talk about the graphics. मेरे graphics काफ़ी simple हैं. मतलब मैंने सिर्फ एक शुरू में डाला था फैम पिज़्ज़ा और एंड में डाला था फिन. It's pretty much all I did, and it was very simple in the sense that I took this, ये 2D lyric title का नाम का एक सब्सक्रिप्शन है Envato से मैंने ये चीज़ उठाई थी, and it's really simple. I just dragged and dropped. मैंने अपना कलर सेलेक्ट किए जो मुझे चाहिए थे, orange in that case,
and I just did it like that, and that was it. My entire video was made. That's basically how I made my video. Kafi simple hai, it's nothing that complicated. I don't know how I did as well as to explain it, because I'm really bad at teaching. मुझे जिंदगी भर लोगों ने यही बोला यार तुझे कुछ भी बताना नहीं आता. So it might be possible that I did a really bad job at explaining it, but I feel like I had a lot to go over with. If you guys felt that this video was helpful, maybe I can do tutorials of specific things rather than have it all jumbled up together, because this is an entire video production. एक एक चीज़ पे अगर हम थोड़ी डिटेल में बात करें, I feel like we can do a lot more. If that is something that will help you, if that is something that can be useful to you in this quarantine period, let me know and we'll do it. That's pretty much it. Thank you so much. Bye bye.